Hello, friends. Welcome to my channel, Love for Birds. When we think about keeping budgies as pets, तो सबसे पहले हमारे माइंड में उनकी केयर के बारे में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे कि हाउ टू कीप देम सेफली इन केज, हाउ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेंजर, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड कौन सी डाइट हमें अपने बर्ड्स को देनी चाहिए जो उनके लिए सूटेबल भी हो और उन्हें हेल्दी भी रखे एंड वी कैन गेट गुड ब्रीड फ्रॉम देम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी डाइट के बारे में जिसको देने से ना सिर्फ हमारे बर्ड्स हेल्दी एंड एक्टिव रहेंगे बल्कि ब्रीडिंग तक पहुंचकर अच्छी ब्रीड भी देंगे। सो फर्स्ट थिंग इज़ गिविंग वेजिटेबल्स टू द बर्ड्स। If we talk about the leafy green vegetables, for example, broccoli, spinach, kale, ये सारी vegetables basically are rich in vitamins and minerals. Vitamin A, C, and K, minerals such as iron and calcium. इसके अलावा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। एज वी विल ऐड वेजिटेबल्स इन आवर बर्ड्स डाइट दैट विल कंट्रीब्यूट टू द हेल्थ बेनिफिट्स, और जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो डेफिनेटली उनसे हमें ब्रीड भी बहुत अच्छी मिल सकेगी और ईज़िली पेरेंटिंग का प्रोसेस हो सकेगा। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ फ्रूट्स। जैसे कि हम सब जानते हैं फ्रूट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स फ्रूट से मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने बर्ड्स को वो फ्रूट्स देते हैं दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर, एज वी कैन से फ्रूट्स विच आर हाई इन वाटर कंटेंट सच एज grapes, strawberries, oranges, berries। ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं और इनके अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। द वाइब्रेंट कलर्स एंड स्वीट अरोमास ऑफ फ्रूट्स आर अट्रैक्टेड बाय द बर्ड्स due to which they can consume them easily. When we talk about grapes, it contains vitamin C and vitamin K, as well as mineral like potassium. Strawberries and different types of berries is a good source of vitamin C and manganese and potassium. Oranges are known for being rich in vitamin C. All these are powerful antioxidants that supports the immune system and keep them healthy and strong, in helping the birds, giving a strong immunity for breeding and parenting.